अब जा रही है आवाज? तेज बोलो। जा रही है आवाज? तेज बोलो। तो आवाज नहीं जा रही थी ना। हीटर बंद कर दो, सो जाओ। टाइम क्या है? 11 बजे। पैर हटाओ जरा, पैर थोड़ा सा सेक लो, उसके बाद बंद कर देना हीटर। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। सेम टू यू भाई, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। कैसे हो आप? अभी आपका तबीयत कैसा है दीदी? कुछ आराम है भाई, तभी तो बैठी हूँ, दवाई खाई हूँ, अभी बैठी हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। और खाना खा लिया है दीदी? खा लिया है भाई, खाना क्या खाएं, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। मैं ठीक हूँ दीदी। ओके भैया, ठीक ही चाहिए, ठीक ही रहना चाहिए। सुरेश भैया आवाज़ नहीं आ रही थी ना, मैंने ऑफ करके फ़ोन फिर से ऑन किया है। आपका खाना पीना हो गया है? और मैं खाना खा लिया हूँ दीदी। ओके भाई, खाना खा लेना चाहिए टाइम से। और बताओ सुरेश भैया, घर में सब लोग ठीक हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आवाज़ नहीं जाती है। सब बढ़िया हैं, अपना सुनाइए। हम भी बढ़िया हैं भैया। हम भी बढ़िया हैं। अरे
बढ़िया रहना चाहिए। मैं सोचा हो सकता है मौन व्रत होगा, इस वजह से नहीं बोल रहे हो आप। ऐसा नहीं हो सकता भैया। किसी काम में कभी बिजी हो जाती हूँ तभी नहीं, अगर हूँ तो बोलती तो जरूर हूँ। प्रियांशु, बाय बाय भैया, बाय बाय। आपके यहाँ तो ठंड नहीं होगा? अच्छा, मैं दिल्ली से बाहर हूँ क्या भैया? जहाँ आप हो वहीं मैं भी हूँ। ज्यादा दूरी तो नहीं आपके हमारे बीच है यहाँ। कि गांव गए हो? सुरेश भैया गांव गए हो क्या? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय भैया, बाय बाय। हमारे यहाँ तो ठंडी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ ठंडी नहीं है? हमारे यहाँ तो ठंडी है भैया। कैसे कहें कि ठंडी नहीं है? गेम ओवर वाला इमोजी नहीं भेजिए। नहीं, गांव नहीं गया हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। अच्छा भैया, नहीं बीच में गांव गए थे ना आप, मैं सोची अभी गांव ही हूँ। अभी अभी शादी की पार्टी खा कर आ रहा हूँ। अच्छा भैया, शादी की पार्टी खा के आ रहे हो, अच्छी बात है। हम लोगों को कहाँ शादी की पार्टी नसीब है। मेरा 10 लाइक का टारगेट पूरा हो गया है दीदी। ओके भाई, थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ठीक है भाई, बाय बाय। यदि समय रहेगा तो फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं है भाई, जाओ सो जाओ, ऐसे टाइम हो गया है। अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भैया, ओके, बाय बाय। भारती भाई, बाय बाय, गुड नाइट। अब तो मैं मई में जाएंगे। अच्छा, वैसे कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कोई नहीं सकते हो? अच्छा, इमरजेंसी में तब जाओगे? हाँ, वही होता है, शादी ब्याह किसी का है जो खास है तभी निकल पाते हैं, कहाँ जा पाते हैं। क्यों? बैटरी मैंने कहा था बैटरी सेवर लगाओ, नहीं आपको तो। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो प्रियांशु भैया? आप तो बाई के सिवा कुछ और सीख लो ना, कुछ बोलना भी सीख लो। आते हो बस बाय बाय बाय। मैं भांजे की शादी है ना, उसकी शादी में जाना है। अच्छा सुरेश भैया, जब आपके भांजे की शादी है तब तो जाना ही है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू सो मच। फूल कुमारी सिस्टर कैसे हैं? अभी तो बर्तन धो कर आ रही हैं, हीटर से सेक रही हैं, ठंड लग रही है उसको तो। हाँ भैया, हीटर ही सहारा, और क्या। हम लोग बस वही, हम भी वही बैठे थे, हीटर के पास ही बैठे थे। कैप लगा लो, खांसी आ रही फिर भी। अब बंद करके सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठोगे नहीं। मेरे पास तो नहीं। वो सामने देखो आपके पैर के पास। रघुनाथ राव, जय भीम, नमो बुद्धाय, लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो भैया? हम अच्छे हैं, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। हम भी ठीक हैं।
सिमरन भाभी के लाइव में था। अच्छा भैया, अच्छी बात है। थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सिमरन भाभी को आपके नहीं जानते हैं भैया। थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू। सुरेश राणा, जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। भैया ये आपकी नई आईडी है ना? इस पे भी पढ़ते हैं वीडियो क्या? अनीत दीदी के लाइव में आती थी। अनीता दीदी की अनीत। थैंक यू सो मच। इस पे वीडियो पढ़ती है क्या सुरेश भैया की सपोर्ट आ रही है आपकी? बताना। हाँ, यह अभी नई आईडी बनाई है। अच्छा, इस पे भी वीडियो डालते हो? या भी ज्वाइन कर लेना, इस पर भी वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर देना, मैं ज्वाइन कर लूँगी वहाँ से। दूसरी वाली जिस पे लाइव बंद हो गई उसका कुछ फाइनल हुआ? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अनीता दीदी के। ओके भैया, थैंक्स। सुरेश भैया बताना लाइव का कुछ कंफर्म हुआ? बहुत लोगों का तो चैनल डिलीट हो जा रहा है। हाँ, इस पर भी 4-5 वीडियो भी डाले हैं, अभी अभी तो बनाई है आईडी। इसकी बात नहीं कर रही, पुराने वाले आईडी की जिस पे आपका लाइव बंद हुआ उस पे पूछ रही हूँ। लाइव चालू हुआ कब तक होगा, कुछ ऐसा है? कोई मैसेज आया? पुष्पा दीदी का तो चैनल ही डिलीट हो गया। 27 जनवरी को चालू होगा, उससे पहले नहीं। ओके ओके भैया, थैंक यू। हो जाएगा चालू, सबका ऐसे हो रहा है। उसके पीछे कोई रीजन होते हैं, इसलिए बंद कर देते हैं यूट्यूब वाले। पुष्पाराज का तो चैनल डिलीट हो गया कल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
27 जनवरी को गूगल पर दिख रहा है चालू होने का। चेक तो कर लिए थे। नहीं, चालू हो जाएगा भैया। बहुत लोगों को जब बैग फिट कर दिए आपने तो चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरे से भारती भाई बोले थे दीदी बैग फिट करने पे हो जाता है, तो मैंने कहा ठीक है। इसीलिए उस दिन मैं गई थी आपके वीडियो पे कमेंट करके आई थी कि मेरे लाइव में आ जाना। तब मैं सिस्टर से नंबर मांगे, फिर उसके बाद भारती भाई साथ बात किए थे ना, बता रहे थे। बहुत लोगों के साथ हो रहा है, क्या करें। आदमी कोशिश करता है अपने भर। मेरा नंबर था, मेरे से ही तो बात हुई थी उस टाइम। वही तो कह रही हूँ ना मैं, भारती भाई से मैंने बोला कि बात करके अगर सॉल्व हो जाता है, सही हो जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि अंजू सिस्टर का भी दोनों चैनल पे लाइव बंद हो गया है। उनको पता है, वो एक बार सही किए हैं, तो मैंने सोचा कर देंगे तो अच्छी बात है ना। आपके लाइव में तभी तो मैं कह रहा था कि कोई भी नंबर ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं भैया, आपकी देखो बात सही है, लेकिन सबको इस तरीके से नंबर देते भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग ऐसे भी है ना जो बेफालतू के लोग होते हैं, नंबर ले लेते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो फिर उलझे क्यों दूसरी की बातों में। हम सोचे ना सिस्टर का नंबर है, इसलिए हम मना कर रहे थे कि एक बार दे दिया, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अब दोबारा मत लाइव में शेयर करो। बहुत लोग ऐसे जो जुड़े होते हैं ले लेते हैं ना, परेशान करते हैं, इसीलिए। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। सब एक जैसे नहीं होते हैं सुरेश भैया, पता है। सबके विचार अलग अलग हैं। इंसान को पहचान पाना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। तबीयत ठीक है। ठीक है भाई, तभी तो बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम है। नींद भी नहीं आ रही। आकाश की भी तबीयत खराब है, उसको खांसी आ रही, वो भी नहीं सो रहा था, इसलिए मैं भी जग रही हूँ। उसको कब से कह रही हूँ सो जा सो जा, नहीं सो रहा, उसकी तबीयत खराब है। बुखार जुकाम खांसी आ रही है। वो भी अभी हीटर के पास बैठा, सोया नहीं है, तब मैं कैसे सो जाऊं, मैं भी जगी रही हूँ। हाँ बंद कर दो बेटा, वो भी नुकसान करता है ज्यादा। नीचे रख दो, नीचे नहीं, इधर साइड में रख दो। इतना तो पहचान ही लेता हूँ, 20 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते, ये 15 साल से तो ठेका ही चल रहा हूँ। नहीं भैया देखो, पहचानना बहुत मुश्किल है, इंसान कितना भी टैलेंटेड हो। समझे, सब दुनिया में एक जैसे नहीं है सुरेश भैया। दवा लिए, दवा गई ना लेके आई हूँ, वो वाली दवाई बंद करी हूँ जो कि बंद नहीं करना था, लेकिन दवाई लेके आई, उसको खाई हूँ। दवाई नहीं खाई हूँ, जो दिमाग वाली दवाई है उसको आज नहीं खाई हूँ भाई। आज बस पेट दर्द की दवाई खाई हूँ। इससे और सर दवाई नहीं खाई हूँ ना, सर भारी भारी से लग रहा है, आंखें के एकदम ऐसी लग रही है। हमारे अंदर में भी 20-25 लड़के काम करते हैं। अच्छी बात है सुरेश भैया। देखो, काम करने वाले बात नहीं है आज के टाइम में ना सुरेश भैया, इस बात को समझिए। सब एक जैसे नहीं होते हैं।
समझे? अब हम सबके मन की भावनाएं नहीं समझ पाएंगे ना, कौन कैसा है क्या नहीं है। सबके भाव विचार बहुत अलग अलग हो जाते हैं। इंसान देखने में चलो हर एक तरीके से सही है, अंदर से क्या है नहीं पहचान, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में ना लोग तो रूप बदल बदल के, आईडी बदल बदल के ऐसे गुमराह कर दे रहे हैं, आप नहीं पहचान पाओगे कौन है, नहीं पहचान पाओगे। कैप लगा लो बेटा, कान से आवाज आ रही है तो अंदर करो, कंबल के अंदर मुंह। आपकी बात सही है, सही है सुरेश भैया। अभी ना देखो आरडी बदल बदल कितना गुमराह कर रहे हैं। आज के टाइम में यूट्यूब पे चल क्या रहा है, जिनको हम अपना समझते हैं ना वही हमारे दुश्मन निकलते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है। बहुत लोगों को बेशक गलत लगता होगा, समझना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में लोग इतना गुमराह कर रहे हैं ना, एक दूसरे को देख के जलन रखते हैं, एक दूसरे को अपद भाषा यूज करते हैं, और आईडी चेंज करके टारगेट करते हैं। तो बताओ समझ पाते हैं हम? नहीं समझ पाते हैं। और वो कोई दूसरे हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं ना वही शायद खास करते हैं ज़्यादातर। ओरिजिनल आईडी से आएंगे बोलेंगे दीदी आईडी बदल लेंगे भाभी, कहीं कुछ कभी कुछ, इस तरीके से पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। थैंक यू सो मच। मुझे तो कभी कभी बहुत ही गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। सो जाओ अब, फिर मैं भी सो नींद आ रही हूँ। हेलो लाइक डन, थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? थैंक यू। कैसे हो दीपक भैया? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है भैया। आप बताओ आप कैसे हो?
हम ठीक हैं। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप गांव गए थे ना दीपक भैया, आ गए कभी गांव ही हो? सो जाओ बेटा, थोड़ा सोओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेश भैया। आज ये लोग जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तब भी हम भी बैठे हैं, हमको आज नींद आ रही है। बाय बाय भैया, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच। सो जाइए आप लोग, टाइम हो गई ज़्यादा। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सोनू भैया। आपकी लाइव चल रही है क्या सोनू भैया? बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिए? घर पहुंच गए क्या आज? आधा घंटा चलाया, घर पहुंच गए? मैं यही हूँ अभी। अच्छा, कब जाओगे? 3 बजे? अरे अम्मी हो बाबू, मुझे नींद आ रही है। आकाश, मैं सोऊं? बताओ। खाना वाना कुछ खाए कि नहीं अभी? कुछ खाना ना खा लो। नहीं, कुछ खा लो। नहीं क्या? थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खा लो। थैंक यू सो मच सोनू भैया। खाना ना खा लो, आप रेस्ट कर लो थोड़ा सा।
हेलो। हेलो अंजू दीदी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? कैसी हो अंजू दीदी? ठीक हूँ। ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। चाय नाश्ता हुआ आपका? मेरी तो तबीयत खराब है दीदी, कुछ नहीं, चाय भी नहीं हुआ। और बताओ दीदी, घर में सब लोग कैसे हैं? सुनील भाई जो डॉक्टर हैं, उनकी आईडी है क्या? नहीं दीदी। मोटिवेशनल करके कुछ आईडी है उनकी। नहीं दीदी, नहीं।